दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं चिकन रेसिपी, वो भी देसी स्टाइल में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये चिकन, इसको हम अच्छे से धो लेंगे। मैंने प्याज लिया है, अब इसको हम अच्छे से काट देंगे। कितना प्याज है? 3 फॉर्मेट में मैं आधा केजी प्याज ले रही हूँ। अब इसको अच्छे से काट लूँगी। देखिए मैंने प्याज को कितने अच्छे से काट लिया, कितनी बारीकी से। अब चलिए गैस को ऑन करते हैं। इसमें चाय का तेल, जीरा, गरम मसाला। इसको अच्छे से लाल कर लीजिए। जब अच्छे से हो जाए उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। और इसको अच्छे से भूनेंगे। जिससे इस तरह से करने से अच्छा बने। इसको भूनने के लिए छोड़ दे 5 मिनट। तब तक चलिए हम अपना पेस्ट बनाने के लिए पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, गरम मसाले, जीरा, इलायची। ये सब का हम पेस्ट बना लेंगे। बीच में चलाते रहेंगे ताकि यह जले ना। और एक बार मेरी तरह से बना के देखिए, मजा आ जाएगा खाने के बाद। देसी स्टाइल बिल्कुल इस तरह से बनाएं। तैयार हो गया देखिए। इसमें अब थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। देखिए 1 चम्मच डाल रही हूँ। अच्छे से इसको चलाना, अच्छे से चलाना। देखिए मेरा प्याज अभी थोड़ा पका है, थोड़ा सा भुनता रहेंगे और थोड़ा भुनने देंगे। जब तक ये अच्छे से भुन न जाए तब तक हम इसमें मीट नहीं डालेंगे।
अब इसमें जाएगा हल्दी 1 चम्मच, थोड़ा और डाल देंगे, अच्छे से कुछ लाएंगे। हो जाएगा इसमें पेस्ट जो हमने पहले पेस्ट बना के रख लिया था वो जाएगा इसके अंदर। अब चाहिए इसमें मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा सा धनिया का पाउडर भी 1 चम्मच। इसमें धनिया पाउडर थोड़ा कम डालेंगे। अब चाहिए इसमें 1 चम्मच नमक। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा पानी, मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा भूनेंगे इसको अच्छे से।